खासकर GMR, हिंदुस्तान हिंदी, हीरो। पानी पिलाओ यार, और ट्यूबवेल का मत पिलाओ, नदी का पिलाओ। Where was I? हिंदुस्तान हिंदी, हीरो, फिनकॉप, BTV, Mahindra Finance, PVR, Idea, Nickelodeon, Inox Air Products, Camlin, Good Earth, ONGC, Finolex, Ola Cabs, IRCTC, CII, Vodafone, Live Pure, Indigo, Airtel, Macan, Apollo, Dr. Reddy's, and the radio partners, Red FM, Fever FM, Big FM, Radio City. My God, isn't it wonderful that everybody is just here? Everybody is just here. I congratulate all of you who have participated and contributed to this program. Thank you very much from DC College and Isha Foundation. What is the next one?
चली सनन सनन नदिया जो सारी, बहती चली मस्त मगन नदिया प्यारी, बहती चली सनन सनन नदिया जो सारी, बहती चली मस्त मगन नदिया प्यारी, गुनगुनाती खिलखिलाती नदिया जो सारी, डूब रही इधर उधर नदिया प्यारी, गुनगुनाती खिलखिलाती नदिया जो सारी, डूब रही इधर उधर नदिया प्यारी, महकी धरती ये महकी
Ladies and gentlemen, brothers and sisters of this enlightened audience, Namaskar. My Dandavat at the lotus feet of Shri Sadguru. I welcome all of you once again for this evening of entertainment with a great purpose called Rally for Rivers. Ladies and gentlemen, to understand the importance of rivers to mankind, we must go to the ancient civilizations of the world, which were river valley civilizations. Mesopotamian civilization on the banks of river Tigris and Euphrates, which is today's Iraq and Kuwait. Egyptian civilization on the banks of river Nile. Chinese civilization on the banks of Yellow River, and of course, Indus Valley civilization on the banks of river Sindhu, which comprised of Bharat, Bactria, Arachosia, Gandhar, and Sindh. Rivers provided food like fish and water to cultivate lands. Rivers were also the trade routes for commerce. So human settlements were formed which turned into cultures and nations. Different definitions of Bharat were formed. Uttaram yat samudrasya himadreschaiva dakshinam varsham tad bharatam nama bharati yatra santati. This was a geographical definition of Bharat given at one point. समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूप्रदेश है उसका नाम है भारत. उसे भारत कहते हैं. But sages of India understood the importance of rivers to human existence. So Bhashyakar Adi Shankaracharya composed a new definition of Bharat with reference to its rivers. He named it Bharat Tirtha Smaranam. Smarami Shatadrum Sindhum Chandrabhagam Saraswatim Vipasham Yamunam Gangam Uttarasthana Surapagan Namami Sharadam Shonam Kaushikim Gandakim Tatha Sarayum Gomatim Purve Brahmaputram Mahanadim Madhye Charmanvatim Kshipram Seve Vetravatim Mahim Sharavatin Chapaschime Narmadam Tapatim Shraye Yamye Godavarim Krishnam Kaverim Tamraparnikam Tunga Bhadram Bhaje Purnam Shankaracharya Pujitam. It is believed that river Saraswati vanished and turned itself into desert due to movement of certain geoplates of southern hemisphere of this planet Earth, which were called Gondwana land. But today, many rivers of Bharat are endangered because of other factors. Factors arising out of man's ambition, need, as well as greed, which results into lack of compassion for Mother Earth and its rivers. The most common words we hear today are global warming, glaciers melting fast, large dams being built, intensive human activity in river basins like sand mining, irregular monsoon, and deforestation. Friends, there are 4 Shruti mantras of Shikshavalli in Taittiriya Upanishad. Satyam Vada, Dharmanchara, Swadhyayan Ma Pramadah, and Prajatantum Ma Vyavachhetsihi. Swadhyayan Ma Pramadah, Swadhyay, Atmachintan karne mein alas mat karo. Friends, it's our time now for introspection, for Atmachintan, and accept our mistakes. Because accepting where we went wrong is the very first step in a new right direction. One of the 4 Mahavakyas of the Vedas tells us the same thing. Tattvam asi, that is that. Accept everything good, accept everything bad. You know, when I went to Amazon rainforest, I heard something very strange. I heard trees make their own rain. I didn't understand. I still don't understand. Trees make their own rain? How? Why are trees so important for rain, rivers, and our future? This evening, my friends, we are going to understand all this today with the guidance of a visionary saint, Sadguru.
I am now going to read out something to you which is given to me by the students, all these students of Delhi College, who are so inspired to perform for all of you and all of us. I read verbatim. This is what the children have to say to all of us. ईश्वर की सबसे सुंदर कृति सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। हम अगर सोचें तो क्या इनके बगैर हमारा जीवन है? नहीं। इस सृष्टि के निर्माता ने बहुत ही संतुलन के साथ इसका निर्माण किया है और हम इसे असंतुलित कर रहे हैं हमारे स्वार्थ से। आज हमें जीवित रहने के लिए जल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसे प्रदूषित कर रहे हैं। हम सबको मिलकर यह कोशिश करनी होगी कि हमें हर तत्व को जीवित रखना है। हमें प्रण लेना है कि हम सब एकजुट होकर इसे बचाएंगे। नदी के दोनों तट पर लहराते वृक्ष लगाएंगे। हमारी नदियां एक बार फिर कल कल करके बहेंगी और ईश्वर के आशीर्वाद से इस जीवन को बेहतर बनाने का एक स्वप्न फिर से एक बार साकार होगा। दिल्ली कॉलेज समर्पित है इस अभियान के लिए और अपने छात्र छात्राओं की पहल और एक कोशिश के रूप में अपनी ये प्रस्तुति दे रहा है। Give them a big hand, ladies and gentlemen. A big hand. Hello. Hello. सहस्रमूर्तये धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। ॐ जलविन्मये विद्महे वीरपुरुषे धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ॐ महाज्वालै विद्महे अग्निदेवै धीमहि
सघन घटा छाई हिमगिरी पर कर त्रिशूल डमरू शिवदार गंगा अवतरण हेतु आज विनती करत भागीरथ ठार घरर घरर घर शोर मचावत उतरी गंगा स्वर्ग लोक से धरती कांपे थर 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 उसे दबाए शंभु चरण से ट्रक दे तगन देता उमड़ घुमड़ कर आई गंगा शिव शंकर के जटा समाई पटक गई वह जटा जाल में सघन घटा की ठाह न पाई मुस्काए तब करल कंठधर छोड़ दिया बस 3 बूंद एक बूंद आकाश गई और एक बूंद भागीरथ पावे एक बूंद धरती पर उतरी जो पवित्र गंगा कहलाई जय गंगाधर हर 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 राम तथे तथे जय गंगाधर हर 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 राम तथे तथे जय गंगाधर हर 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 राम तथे तथे ॐ अनंत श्री हरि नारायण जलतरंगा मनहरो तुंग जलतरंगा गंगा महाकाय कमल करो गंगा महाकाय कमल करो विभूषितानंद रिपुतमंगा विभूषितानंद रिपुतमंगा धा 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 धी धा धा धी धा 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 धी धा एक दो तीन चार पाँच 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 धा एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच धा एक दो तीन चार पाँच 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 धा धी धा 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 धी धा धा धी धा 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 धी धा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात
the main singer? Lady? Lady? Lady. Okay. नहीं podium नीचे. But उनको बोल दो immediately because I'll start speaking. Are they ready? MC mic बोल दो. Lapel. बाद में लगा दो ना. लगा दो. Friends, give them a big round of applause once again. To our children of Indore, Delhi College, such a wonderful performance of different dance styles, Odissi, Bharatnatyam, modern dance, new age dance, and the energy children had. Wonderful, wonderful. And it was for a change nice to see someone else playing Krishna. Also give a very, very big hand to the live band over there. People behind the scene generally don't get noticed, and we must acknowledge them. A brilliant job done. But there's a problem now. There's a problem, real problem. The children of DC have taken this show, this performance to such a great height that who's going to accept the challenge to take it even further and higher? It's a band from Amchi, Mumbai named Mati Bani. The very word suggests Mati Bani, Mati Ki Vani. It's a band which specializes in folk music, folk songs mixed with fusion music. And the lead singer is a wonderful lady named Nirali. Here's Mati Bani for you. Koti Koti Pranam Sadhguru. Thank you for this beautiful opportunity to sing in presence of the divine Sadhguru. Thank you so much. We are going to start with a song called Boondana Boondana Barse Meha. We are blessed to experience the beauty, the joy, the celebration that rains bring along with them. But imagine if we didn't have rivers, will there be rains? No. This song celebrates the joy, the feel, the beauty of the rains that is surrounding us at this moment. And let us soak ourselves in the notes of Rag, Mia Ki Malhar. Boondana boondana barse meha, kajrari kari badariya, aise nache mora manva, jaise ban mein mor papiha. So in this premises, I actually saw a peacock. So see, coincidence? No, serendipity. Yes. Boondan boondan barse meha. Noor Mohammad Sodaji from Kutch, one of the best folk artists that our country has. He has played with the masters like A.R. Rahman sir and a lot more. बरसे मेहा बूंदना बूंदना बरसे मेहा बूंदना बूंदना बरसे मेहा बूंदना बूंदना बरसे मेहा
कजरा रे कारी बदरिया, कजरा रे कारी बदरिया, ऐसे नाचे मोरा मनवा, ऐसे नाचे मोरा मनवा, जैसे मन में मोर पपीहा, जैसे मन में मोर पपीहा, बूंदन बूंदन बरसे बेहार। Come on everybody, let's celebrate the rain. Okay, I want all of you to sing along with us. Boondana boondana, the droplets of the rain. Boondana boondana, boondana boondana, boondana boondana boondana, nisa nisa nisa, nisa nisa re 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 re, re ba ma ba ma ba ma ba ma ba ma ba ga. Ma ma ba 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 ma.
next song is by Sounds of Isha. Shivani is going to sing it. Shivani and Kalpana. जब आया तू जगत में लोग हंसे तू रोए जब आया तू जगत में लोग हंसे तू रोए ऐसी करनी कर चलो आप हंसे जग रोए कहाँ से आया कहाँ जाओगे खबर करो अपने तन की
छोरी रसिया। मृगनैनी 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 हो यार नवल रसिया। 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 मृगनैनी नैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी मृगनैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी झिरमर 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 बालम जी मारो बालम जी मारो बालम जी मारो बालम जी मार बालम जी मारो बालम जी मार बालम जी मारो बालम जी मार बालम जी मारो झिरमर भरे से में बालम जी मारो झिरमर भरे से में बालम जी मारो झिरमर भरे से में पुरुषोत्तम प्रभु सब छोड़ ब्रिज में बसिया। सब छोड़ ब्रिज में बसिया। मृगनैनी मृगनैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी झिरमर 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 झिर 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 झिरमर झिर 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 झिरमर 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 बालम जी मार बालम जी मार बालम जी मार बालम जी मार बालम जी मारो झिरमर भरे से में बालम जी मारो झिरमर भरे से में बालम जी मारो झिरमर भरे से में मृगनैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी हो यार नवल रसिया। मृगनैनी हो यार नवल रसिया।
Thank you. Thank you, Mati Bani. Thank you once again. With sounds of Isha, traditional Haveli Sangeet of Rajasthan, Mriganayani. What an exhilarating challenge they accepted after DC College Kids. Friends, every great idea germinates from a great mind. Our Rigveda says, Rishihi Vipra Vichakshana. Every illumined mind that has infinite vision, and that mind, that person gives that vision to the society at large for the benefit of the society, is a sage. Rally for Rivers is infinite vision. Rally for Rivers is need of the hour. And this idea germinated from Shri Sadhguru. We must thank him for this idea. A big hand. I thought you have something to show him. I thought you have something to show him. There you go. Show him. Show him the support of Indore. What a wonderful city supporting rejuvenation of rivers, that our rivers must live long. Ladies and gentlemen, this Rally for Rivers started on September the 3rd in Coimbatore, and it's come a long way, a very, very long way, and it has a longer way to go. And I want you to see the update of this movement, which is called Rally for Rivers. Next 30 days, I am on the road. I want you to stay awake with me. If you consume water, you must be a part of this. நன்மை அது வேணும்னா நாம ஊரு ஆறு எல்லாம் பார்த்ததானே நன்மை. Here we are at the Vivekananda Memorial Rock, at this iconic place, and the Rally for Rivers is going to take off from here in Kanyakumari. We are glad to hear that governments and the minister and the people of Kerala have managed to revive one or two important rivers, which is a wonderful act. இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிற சவால் சாமானியமான சவால் இல்லை, நம்ம உயிருக்கு சவால் இது. சும்மா உணர்ச்சி வசமா போனா இதுக்கு தீர்வு வராது, நமக்கு தீர்வு வந்துடும். I know you're not rallying for rivers, you're just protecting yourself from the sun, and that's what I want you to do for the next 30 days. Sun means like this, rain means like that, nothing happening means like this. Now, if you give a missed call, the river will not come up. What we are working towards is a policy. If we implement the policy in the next 20 to 25 years' time, the water will rise by minimum 15 to 20%. Before we die, we want to see that. If you find a solution for a problem, you must be honored for your intelligence. If you find a problem in every solution, you must be put aside in this country, because we need solutions. When I park the car here, the meter is logging in 3,069 kilometers, 8 days on the road. The rally is rolling on. ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడ చేరుకుంది. River is not your or my personal property. River is a national treasure. నేను వారికి హామీ ఇస్తున్నాం, ఆ పాలసీని మొదట రాష్ట్రం అమలు చేసే రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఉంటుంది. बाबा ने इस देश की जैसी नदियां थी वैसी नदियां वापस सौंपने का संकल्प लिया है. I welcome Sadhguru
and the Rally for Rivers to the city of Hyderabad, the city of lakes. On behalf of our state of Telangana, I assure that government is ready to join hands for protection of rivers. This is the moment for the citizens of this nation to express very clearly that long-term policies which are for the well-being of the people and the nation and for the future generations, we are ready for that. I've seen people, they keep a little bit of Ganga water for years in their homes so that the last thing that they consume in their life is Ganga Jal. This river has depleted 44% in the last 50 years. This is no more a joke. मैं सदगुरु जी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वस्त करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार इसमें अग्रसर होगा, अग्रभागी होगा, हम लोग इसको सफल बनाएंगे। अगर रिवर्स सर्वाइव नहीं होते तो I don't think we are going to survive. So we are with you, sir. And the mothers of Gujarat have also given us a Mahatma and Sardar Patel and a past Prime Minister and a present Prime Minister. I'm asking you now, will Gujarat give me 100 youth? Only qualification is, you must give up one thought, what about me for 3 years? யார் காவேரியாருங்க ஒரு நாளையில் இப்படி காஞ்சி போனது இல்லைங்க, தண்ணியெல்லாம் நிறைய வருது. இவ்வளோ நாளைக்கு முற்போடு இப்போ தானுங்க இப்படி காஞ்சி போச்சு. ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಳೆಗಳು. మా చిన్నప్పుడు అంత మొదలు ఎప్పుడు వరదలే, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నీళ్ళతోనండి మానవుడి జీవనం అంతా నీళ్ళతోనండి. నేను నీళ్ళేనండి మన జీవనాధారం అది. Flooding from monsoon rain in western India has swept away much that was in its path. Western Maharashtra is facing floods and drought at the same time. ಇಂಡಿ ಭಾಗದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. North there are floods, in the south there are droughts. This is a clear case of the mismanagement of the ecosystem. Kerala is starving for water the moment rain stops. पैसा आप कितना ही हो, जब जल ही नहीं होगा तो पैसा किस काम का। The Indian rivers are in a dangerous state. भारत की नदियों की हालत बहुत बुरी है। अगर अगले 10-15 सालों में हमने सही चीजें नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। जब बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, बारिश न होने पर सूखा पड़ जाएगा। ऐसा ज्यादातर नदियों के साथ हो रहा है। इस देश की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बिना किसी आधुनिक विज्ञान के, बिना किसी तकनीकी सहायता के, बिना किसी बड़े बुनियादी ढांचे के, सिर्फ पारंपरिक देशी ज्ञान से हमारे किसान 130 करोड़ लोगों के लिए भोजन पैदा करते हैं। नदी में 12 महीने पानी बहता रहता था, पर अब नदी बारिश होती है तो नदी में इतनी तेजी से बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। விவசாயிகளுக்கும் வேலை இல்லை, வயல்லையும் வெள்ளாமை இல்லை। पिछले 10 सालों में हमारे देश में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। ये कोई मजाक नहीं है। चारों युद्धों को मिलाकर भी इतने लोग नहीं मरे। हमें लगता है कि ये बस बैंक के कर्जे के कारण होता है। हाँ, वो सारे कारण भी हैं, लेकिन किसान के लिए सबसे बड़ी बुनियादी चीज है उपजाऊ जमीन और ढेर सारा पानी। अगर आप कोई फसल उगाते हैं, मान लीजिए आपने 1 एकड़ जमीन में 10 टन गन्ना उगाया, इसका मतलब है कि आपने 10 टन ऊपरी मिट्टी निकाल ली। मिट्टी को हम तभी मिट्टी कहेंगे जब उसमें कम से कम 2% जैविक तत्व हों। मगर आज पंजाब,
हरियाणा जैसे राज्यों में और मराठवाड़ा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मिट्टी में सिर्फ 0.05% जैविक तत्व रह गया है। इसका मतलब है कि अगले 3 से 5 सालों में यह मिट्टी रेत बन जाएगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पेड़ों से गिरे पत्ते और पशुओं का गोबर। पेड़ हम बहुत पहले काट चुके हैं, पशुओं को देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर आप किसी एक जानवर को अपने भोजन के रूप में खाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लाखों जानवर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कोई तरीका नहीं है। मिट्टी और नदियां आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नदियां 12 महीने बहती रहें, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ होंगे, केवल तभी ऐसा हो पाएगा। भारत में जो औसतन 45 दिन बारिश होती है, उसे अगर 365 दिन नदी के जल के रूप में बहना है, तो भरपूर पेड़ पौधे होने चाहिए और जड़ों का नेटवर्क होना चाहिए जो पानी को जमीन में रोक कर रखे और उसे बूंद बूंद करके नदी में रिसने दे। जब पेड़ नहीं होते तो बारिश का पानी तुरंत नदियों में भर जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। बारिश के रुकने के बाद नदियां सूख जाती हैं। जहां ढेर सारे पेड़ होते हैं, वहां की मिट्टी आसानी से बारिश के पानी को सोख लेती है, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को छेदादार बना देती हैं और अंदर छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। इन चैनल्स के कारण मिट्टी के अंदर नमी आ जाती है और जमीन के ऊपर पानी का प्रवाह कम हो जाता है, जो बाढ़ के खतरे को कम कर देता है। मिट्टी द्वारा सोखी गई नमी सतह के नीचे रिसती रहती है और बारिश के रुकने के बाद भी धीरे धीरे नदी में जाती रहती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि नदी पूरे साल बहती रहे। हमें एक बात साफ तौर पर समझनी होगी। लोगों को लगता है कि पानी के कारण पेड़ होते हैं। नहीं, पेड़ों के कारण पानी होता है। अगर हमारे पास काफी संख्या में पेड़ होंगे तो पर्याप्त बारिश भी होगी। अगर पर्याप्त बारिश होगी और पेड़ भी होंगे तो वो पानी धरती में रिसेगा और नदियां बहती रहेंगी। हम यह पक्का करना चाहते हैं कि नदियों के दोनों ओर कम से कम 1 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ ही पेड़ हों। सरकारी जमीन पर जंगल लगाए जाएं और किसान अपनी जमीन पर फलों, आयुर्वेदिक औषधियों या दूसरी तरह के पेड़ लगा सकते हैं। इस योजना पर अमल करने से आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ पर्यावरण की भी रक्षा होगी। ज्यादातर किसान 6 से 7 सालों में अपनी आमदनी 3 से 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना होगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने मेरी पुकार का उत्तर दिया। मैं सदगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और उसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। अगर हमारी नदियां हमारे समय में ही सूख रही हैं, तो साफ है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। आप सभी पूरे जोश से इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी नदियों को नष्ट नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 3 सालों में 5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। यह उनके जबरदस्त संकल्प को दिखाता है। इसे एक जन आंदोलन का रूप लेना होगा। इसके लिए सरकार के पक्के इरादे और नीति की जरूरत है। इसमें निजी उद्योगों और व्यापारियों को भी हिस्सा लेना होगा। सितंबर के महीने में हम नदियों के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद ही गाड़ी चलाऊंगा और ये रैली 16 राज्यों से होकर गुजरेगी, जहां बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि पूरे देश में ये जागरूकता पैदा की जा सके कि हमारी नदियां मर रही हैं। सभी मुख्यमंत्री नदी अभियान के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। नदी अभियान का उद्देश्य एक सकारात्मक नदी नीति के लिए जनता का समर्थन जुटाना है। क्योंकि इसका नतीजा सामने आने में लंबा समय लगेगा, सरकार को इसे संभव बनाने के लिए व्यापक जन समर्थन की जरूरत होगी। अपनी नदियों को बचाने के लिए आप 80009 80009 पर मिस्ड कॉल देकर अपना वोट दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और रैली फॉर रिवर्स में
मैं बिल्कुल और पूरे दिल से साथ में हूँ। सदियों से हमारी देश की नदियों ने हमें पाला पोसा है, लेकिन आज ये नदियाँ तेजी से सूख रही हैं। India's major rivers have been depleted by 40% in the last few decades. By 2030, we will be left with just 50% of water for us to survive. In India, we call rivers our mothers, but today our rivers are dying. नदियाँ हैं तो हम हैं, नदी है तो जीवन है. Reviving the rivers is the most important thing country should look into. This is the need of the hour. रिवर्स को बचाना बहुत जरूरी है. इस मुहिम में हम सबको मिलकर आगे आना होगा. It's not only for India, it's for the whole planet. This is a movement which symbolizes a change in consciousness about our relationship to the world. I support it and I want everybody to go out there and support this. If not today, then when? नदियों को बचाने के लिए और हमें बचाने के लिए मैं रैली फॉर रिवर्स यानी कि नदी अभियान मैं शामिल हो चुका हूँ. आप भी साथ में जुड़िए, मिस कॉल दीजिए 80009 80009. If we are together and dedicated, the change will happen. मैं आप सभी से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आग्रह करता हूं, जिस भी तरह से आप हिस्सा ले सकें. जब मैं कहता हूं आप सभी, तो मेरा मतलब हर उस इंसान से है जो पानी पीता है. हम इस देश की आने वाली पीढ़ियों को सबसे अच्छा उपहार यही दे सकते हैं कि हमारी नदियों में पानी बह रहा हो और हमारी जमीन अच्छी और उपजाऊ हो. ये डरना नहीं है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं है. ये अभियान का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि हमारी नदियां सूख रही हैं. पानी पीने वाले हर इंसान को इस नदी अभियान में अपना सहयोग देना ही होगा. Namaskar once again. So true, whatever Sadhguru said, so true. I told you in the beginning that when I had gone to Amazon rainforest, they told me something which I had never heard. The trees in Amazon make their own rain. And I asked one botanist over there, what is the meaning? And he said, you know, have you studied botany in college? I said, yes, I did. In botany, we were taught that the plants make chlorophyll, and while making chlorophyll, through the small pores on each leaf, which is called stomata, they release some certain amount of vapor. That vapor goes up in the air, in the atmosphere, and creates humidity, and that humidity attracts the rain clouds, and we have rain. No wonder the thick jungle of Amazon rainforest has so much of rainfall. How true what Sadhguru said. How true. Friends, it's time to invite all our dignitaries on stage to listen to their guidance. To begin with, I invite a gentleman who was one of the chief motivators of this Ayojan. I told you this, ये इतना भव्य दिव्य जो आयोजन आपको दिख रहा है, इतने इंदौर के लोग यहाँ उपस्थित हैं, इतने इंदौर के स्पॉन्सर्स हैं. This wouldn't have been possible for a team of 40 people led by Shri Devraj Singh Badgara, Vice President, Governing Board, Delhi College. Please grace the stage. Next I invite Shrimati Malini Ji Gaur, the Mayor of Indore.
वो भी आएंगे. Please come to the stage and grace the dais. Next, I invite Rajmata Gayatri Raje Puwar, the President Governing Board, Delhi College. Kailash Ji Vijayvargiya, one of the most popular politicians of Indore and the National General Secretary of Bharatiya Janata Party. Shrimati Sumitra Ji Mahajan, who's been a member of Parliament of Indore from 1989. She's been tied to everybody and to me. And the Honorable Speaker, Lok Sabha. Unfortunately, the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Ji, could not make it for this function because of some other commitment. So he sent his apology and lots of good wishes for this movement called Rally for Rivers. And as we call it in Hindi and Sanskrit, the Utsav Murti, Shriman Sadguru. Friends, I also want to invite the principal of Delhi College, Shri Neeraj Ji Bhadotia, on stage. He's been an inspiration for Delhi College children. All the performances that you saw, the children performed, it's all because of Neeraj Ji. Give him a big hand. There's going to be a small photo opportunity for everybody. This photograph will inspire many more people who could not come to today's function. Rally for Rivers, save our rivers. Thank you. Thank you, everybody. Now it's also time to praise our children. The Rally for Rivers has caught the imagination of every segment of the society, especially the children. They have been engaged with this movement through creative writing in partnership with Koyuko Camlin and creative art competition in partnership with Nickelodeon in a big way. The creative writing competition was conducted for 5th, 6th and 7th grades of schools across India with the help of Koyuko Camlin and Isha volunteers. The topic for the competition was Save Rivers, India's Lifelines. We have all Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, 3,200 children participated in the contest. Give them a big hand. 3,200 children. And Delhi College was instrumental in connecting with all these schools. We have all Madhya Pradesh winners of the contest with us today. I request Principal Neeraj Ji Bhadotia to come on the stage and give away the prizes. I would quickly like to announce the winners. For grade 5th, grade 5, the prize goes to Vanshika Sangla of Delhi College, Indore. I would also request Saumitra Ji, Saumitra Prasad, Head Marketing of Camlin, to be on the stage. Saumitra Ji, I'm so sorry I
My apology. For grade 6, the prize goes to Harsh Advani, Billabong High School, Bhopal. And for grade 7, the prize goes to Sneha Sinha, Billabong High School, Bhopal. My hearty congratulations to all the children who won this competition. Give them a big hand. Give them a very, very big hand. They are the chosen ones from 3,200 children. 3,200. I think it's a tougher competition than passing UPSC exam, Commissioner Saab. Sanjay ji, to be selected out of 3,200, is it tougher than UPSC? Give them a big hand. I thank Neeraj ji and Saumitra ji and request you to grace the audience. Please, thank you very much. The children of DC College keep on surprising me all the time. They have now come out with a song on the birth of river Narmada, which is also called Reva, and how she is born in Amarkantak and she flows all the way through in service of mankind. A beautiful song which is going to be sung by Varuni Agarwal, Navya Sharma, Sanvi Gupta and Neil Mittal. They deserve your blessings, sir. Hare
A big hand to Delhi College children. Big hand. It's time for inspirational speeches. To begin with, I invite Rajmata Gayatri Raje Puwar, President Governing Board of Delhi College, to inspire the audience. परमादरणीय श्रद्धेय संत श्री सद्गुरु जी, सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, सम्माननीय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दिल्ली कॉलेज श्री देवराज सिंह बडगारा जी, सम्माननीय राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी और हमारे वरिष्ठ नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रथम नागरिक इंदौर श्रीमती मालिनी गौड़ जी, भाइयों और बहनों, मैं दिल्ली कॉलेज परिवार की तरफ से समस्त उपस्थित महानुभावों को हृदय से अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली कॉलेज को, जो 150 साल से ज़्यादा से हम नई पीढ़ियों को ज्ञान और संस्कार दे रहे हैं और जहाँ अनेक बुद्धिजीवियों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसी दिल्ली कॉलेज परिसर में हम आज एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं जहां आध्यात्मिक क्षेत्र में माने जाने वाले संत श्री सद्गुरु जी जैसे व्यक्तित्व अपने विचार रखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो किसी कारणवश आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है, इस अभियान का सफलतम क्रियान्वयन हमारे प्रदेश में कर चुके हैं। नमामि नर्मदा के तहत नर्मदा तट पर 6 करोड़ से ज़्यादा पौधों का वृक्षारोपण हुआ है और मां नर्मदा से शिप्रा को जोड़कर असंभव को संभव किया है। ये आदरणीय सद्गुरु जी की प्रेरणा रही है। सद्गुरु जी, we are honored and privileged to host you in our school for such a noble cause. I extend a very warm welcome to you. Thank you. Next, I invite Shri Devraj Singh Badgara, Vice President, Governing Board, Delhi College. Respected Sadhguru, Honorable Lok Sabha Speaker Shri Sumitra Mahajan ji, President Board of Governors Rajmata Devas, Shri Kailash Vijaygarg ji, Senior BJP Member, Honorable Mayor Srimati Malini Gaur ji, my colleagues on the board, friends and children. From where I stand today, this is probably one of the most momentous causes Delhi College and its students have aligned with, for which we are grateful to Sadhguru, truly a well-meaning and magnetic personality, and his initiative to save our drying rivers and depleting forests. Today, with Rally of Rivers, I'm hopeful and optimistic that these gifts of nature will be nurtured back to health and preserved for generations to come. However, it seems even the gods are with you, Sadhguru. From the time you started your rally on the 3rd of September, it's been raining so heavily all over the country. So I'm sure God's wishes are with you and for this Rally of Rivers. I'm grateful to my board members, the principal Neeraj Badotia sir, members from the government, our collector Saab, Nishan ji, a special thanks to you sir for all the help, all the schools, colleges and association, and my team has really worked hard. So thank you. मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती मालिनी जी गौड़, मेयर ऑफ इंदौर। सबसे प्रथम भारत माता और सद्गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अपनी इंदौर शहर की लोकप्रिय सांसद
और लोकसभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी आदरणीय ताई जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, दिल्ली कॉलेज कमेटी की प्रेसिडेंट आदरणीय मेरे साथ विधायक भी हैं आदरणीय गायत्री राजे जी, वडगारा जी उपाध्यक्ष कमेटी के, सभी दिल्ली कॉलेज के सामने बैठे सभी मेंबर्स, हमारे संभायुक्त जी, कलेक्टर साहब, एडीजे साहब, डीआईजी, उपस्थित सभी इंदौर शहर की बहुत ही प्यारी जनता जिन्होंने इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में सहयोग किया, मैं सभी की ओर से सद्गुरु देव का स्वागत करती, इंदौर शहर में अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने इस नदी अभियान को आगे बढ़ाया। सद्गुरु जी ने संपूर्ण विश्व की सबसे विकट समस्या समाज को दिशा देने की भागीरथी अभियान चलाया है। भारत में ही लगभग सभी नदियां अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा के लिए विशेष मंत्रालय बनाकर नदी शुद्धिकरण को प्राथमिकता पर रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल जी नदी जोड़ो अभियान सफलतापूर्वक कार्य किया। अब पुनः केंद्र सरकार इस पर तीव्र गति से काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा से करोड़ों लोगों को नदी से जोड़ा है। जब नदियां हर व्यक्ति की श्रद्धा का केंद्र नहीं बनेगी, तब तक नदियों को शुद्धिकरण की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि हमने जब देखा है कि जब हमने स्वच्छता का जो काम किया है नगर निगम ने, लेकिन हम संसाधन कर सकते थे, हम नगर निगम की टीम लगा सकते थे, लेकिन जब तक जनता अवेयर नहीं होती या जनता के प्रयास नहीं होते तो हम स्वच्छता में नंबर 1 नहीं आ सकते थे। इसीलिए सद्गुरु के इस जन जागरण अभियान में देश के करोड़ों लोग नदियों से जुड़ेंगे और हम भी इस इंदौर शहर जो कान्ह नदी, सरस्वती नदी, जो प्राचीन काल में होलकर जमाने में बहुत सुंदर नदी हुआ करती थी और फिर नाले में तब्दील हो गई, लगातार आदरणीय ताई जी ने भी इसके लिए प्रयासरत है और हम नगर निगम की टीम से उसको सफाई करने का काम कर रहे हैं। इंदौर का सौभाग्य है कि रैली फॉर रिवर अभियान से सद्गुरु जी के चरण इंदौर की पावन धरा पर पड़े। हम विगत 2 वर्षों से सतत इंदौर के मध्य बहने वाली करीब 22 किलोमीटर लंबाई की कान्ह नदी शुद्धिकरण का लगातार हम काम कर रहे हैं। नदी की गाद निकालकर बाहर फेंकना, नदी को वास्तविक चौड़ाई तक लाना, नदी में मौजूद हेरिटेज स्ट्रक्चर जैसे स्टाप डैम एवं घाटों का संरक्षण जैसे काम नगर निगम युद्ध स्तर पर कर रही है। नदी में मिलने वाले सीवर दूषित जल को रोकने के लिए निगम सीवरेज सिस्टम पर लगातार काम कर रही है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं परम पूज्य सद्गुरु से कान्ह सरस्वती शुद्धिकरण अभियान के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ और आपके आशीर्वचन मार्गदर्शन से इंदौर का हर नागरिक कान्ह सरस्वती नदी शुद्धिकरण का भागीदार होगा। मैं इंदौर की जनता की ओर से विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि इंदौर की जनता बहुत अवेयर है, लगातार हमको सहयोग कर रही है और आगे भी सहयोग करती रहेगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कैलाश जी विजयवर्गीय।
सबसे पहले तो कुशल संचालन के लिए नीतीश जी का ताली बजाकर अभिनंदन करें जरा। ये इत्तेफाक है कि आज सुबह जब मैं दिल्ली से इंदौर आ रहा था तो मैं YouTube पे गीता सहारी देख रहा था और आपको ही देखा मैंने YouTube पे, और आज शाम को साक्षात दर्शन हो जाएंगे इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। मंच पर उपस्थित हम सबकी प्रेरणा के केंद्र आध्यात्मिक संत, मेरा बेटा कहता है कि पापा आप वहां जा रहे हो ना? मैंने कहा हाँ। बोले इस धरती पे रॉबिन हुड है वो। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, नाचते हैं, नचाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात है युवाओं को जो प्रेरणादायक उद्बोधन देते हैं वो YouTube पे सुनने लायक होता है। ऐसे आध्यात्मिक संत के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। लोकसभा की हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष सांसद आदरणीय ताई जी, इंदौर की लोकप्रिय महापौर आदरणीय मालिनी जी, दिल्ली कॉलेज के चेयरपर्सन, हम सबकी भाभी भी, विधानसभा की सदस्य भी और चेयरपर्सन आदरणीय देवास महारानी गायत्री देवी जी, इस कार्यक्रम को जिसकी मेहनत, जिसकी टीम की मेहनत से ये भव्य हुआ है, ऐसे भाई देवराज जरा ताली बजाकर देवराज का भी अभिनंदन करें। देवराज, ये कार्यक्रम भव्य आपने कहा आपकी मेहनत से हुआ है, पर ये दिव्य हुआ है सदगुरु की उपस्थिति से। उपस्थित सभी मित्रों, नौजवान दोस्तों, जब हम लोग पहले जो प्रेजेंटेशन देख रहे थे, जो इस कार्यक्रम की भूमिका वाला वीडियो देख रहे थे, उसमें नदियों के हालात के बारे में और भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए बड़ा सुंदर वीडियो हम लोगों ने देखा। सदगुरु किस लिए सारे देश में घूम रहे? नदी अभियान, नीचे है भारत कल्याण। ये भारत कौन है? ये भारत मैं हूं, भारत आप हैं, भारत हम सब हैं। हम सब के लिए, कल्याण के लिए सदगुरु आज हमारे शहर में आए हैं। मैं चाहता हूं सब लोग खड़े होकर तालियां बजाकर जरा सदगुरु का स्टैंडिंग ओवेशन देंगे तो मुझे लगता है कि इंदौर की परंपरा के अनुसार सदगुरु का सम्मान होगा। सदगुरु में 2004 में मिनिस्टर था। उज्जैन में जब सिंहस्थ हुआ था तब मैं उसका प्रभारी था। मैं जब शिप्रा नदी में गया देखने तो वह नाला था, नाला, नदी नहीं थी। हम कैसे सिंहस्थ को मनाएंगे, एक चिंता का विषय था। उसके पहले मेरे को बहुत ज्यादा शिप्रा के बारे में अध्ययन नहीं था, मैं इसको स्वीकार करता हूं। फिर हमने चंबल नदी का पानी लिफ्ट करके उस नाले के पानी को बहाया और लोगों को स्नान कराया। पर जैसे ही सिंहस्थ खत्म हुआ, हम लोगों ने निर्णय किया कि शिप्रा को फिर से जिंदा करेंगे। पर जिंदा कैसे करें? जो दर्द आपने बताया कि पेड़ नहीं होने से सारे पहाड़ एकदम अनुपम खेर के सर की तरह हो गए। झाड़ ही नहीं बचे तो पानी आएगा कैसे? ये चिंता के विषय। फिर हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, सबने कैबिनेट में निर्णय लिया कि नर्मदा जी का पानी शिप्रा में डालेंगे। शिप्रा जी जिंदी जरूर हो गई नर्मदा का पानी डालने से, पर उनका स्रोत जो पहाड़ों से निकलने वाला पानी था अभी वो जिंदा नहीं हुआ है। आपके आशीर्वाद से हम करोड़ों पेड़ लगाकर उस स्थान को जिंदा करेंगे और शिप्रा जी को फिर से
अपने स्रोत से लाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी इच्छा है और उसमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ये बात बिल्कुल सही है, आपने वीडियो में दिखाया कि बादल वहीं ठहरते हैं जहां जंगल होते हैं। एक गजल है कि बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, बड़ी अच्छी गजल है वो मुझे बैठे बैठे याद आ गई थी। बादल वहीं रुकते हैं जहां पेड़ होते हैं, दीवाना होता है बादल। बादल ही है प्रकृति के अंदर और वृक्ष जंगल शी है। यदि शी दिखाई नहीं देती तो वो आगे बढ़ जाता है। तो बादल को दीवाना कहा गया, वह ही है ही। यदि वो निकल रहा है और नीचे शी नहीं दिखेगी तो रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा आगे। मित्रों, हमें पेड़ों की रक्षा भी करना, हमें नदी भी बचाना है। हम लोग सब अपने बच्चों के लिए मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, व्यवसाय बढ़ाते हैं, पर प्रकृति के लिए हम कितना करते हैं, यह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आत्मचिंतन करें और सद्गुरु के सामने शपथ लें कि हम पेड़ लगाएंगे, नदी बचाएंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। मैं एक बार फिर से सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। देवराज, इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। The Honorable Speaker of Lok Sabha, Srimati Sumitra Tai Mahajan. परम आदरणीय सद्गुरु और सम्माननीय मंच और यहाँ पर उपस्थित, अगर सद्गुरु किसी बात के लिए कहे और समझदार लोग उसमें नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। So Sadhguru ji, you have given a call, एक प्रकार से, एंड इंदौर की जनता जो है आपके एक कॉल से इस प्रकार से सब उमड़ी है, मगर इससे 4 गुना बाहर भी है, बिकॉज दे डोंट हैव पासेस एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मिले कि पासेस चाहिए। मैंने कहा इतनी देर से अब नहीं मिलते, अब सद्गुरु की आवाज सुनो, आप खाली देखो। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, एक थोड़ा सा अगर गीत है। हमने दिल्ली में वी हैड ए कॉन्क्लेव ऑफ women parliamentarian and women legislators, and at that time we had a song because that conclave was for women, empowered women for resurgent India. They will make India powerful. That was the theme. And in that theme, women and river, वो गीत ऐसा बना था कि रिवर पे गीत बना था, मगर पूरी तरीके से लगता था कि ये स्त्री की ही एक प्रकार से कैरेक्टर बताता है। हाउ एक नदी कैसे चलती है, एक उम्मीद से चलती है। आप इसको कितना भी रोको, नहीं रुकती, वो अपना मार्ग निकालती है। कभी गुस्से में पत्थर को तोड़ती है या कभी अपना रास्ता भी बदल करके अपने लक्ष्य पे अटलता से चलती है। एंड शी गिव्स ए लाइफ, लाइक women also gives a life to not only to children. तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट वो गीत सुनाना चाहूंगी, if it is there. छपाका छपाका तरन्नुम तरन्नुम, छपाका छपाका प्रसून जोशी ने ये गीत लिखा था और प्रसून जोशी ने ही तैयार किया था। उम्मीदम उम्मीदम, नई एक नदी हो, नए कल को पानी
पूरा गीत बहुत लंबा है, लेकिन एक झलक आपको सुनाई कि एक आवाज भरने के लिए कि कौन रोकेगा हमें। मैं तो चलूंगी, मैं मेरा मार्ग बनाते हुए चलूंगी, लेकिन मैं लाइफ लाइन हूँ, मैं जीवन देने वाली हूँ। और इस लाइफ लाइन के लिए सद्गुरु जी, यू हैव कॉल्ड फॉर अस, आपने कॉल दिए है। और ये देखते हुए हमें भी मालूम तो है, हम भी सोच रहे हैं ये कहाँ भी जा रहा है कि अगर आने वाली अगली वर्ल्ड वॉर होती है, दैट विल बी फॉर वाटर, दे से सो। और मैं आपको बताती हूँ, मैं अलग अलग देशों में ये हमेशा होता है कि नदी के किनारे ही जीवन बसता है, नॉट ओनली इन इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो आई हैव सीन। आप अगर लंदन जाओ तो आपको थेम्स की कहानी बताई जाएगी। मैं अभी जर्मनी में गई थी, तो वहां उन्होंने राइन नदी को पूरा साफ करने का एक अभियान भी चलाया और राइन नदी को साफ भी किया। बट नॉट ओनली साफ किया, मैं आगे जो बताना चाहती हूँ, जो लोगों ने मुझे बताया, ऑन एवरी किलोमीटर, यू कलेक्टर और संजय जी आप दोनों सुने, ऑन एवरी किलोमीटर उन्होंने ऐसा एक संयंत्र स्थापित किया है कि इन बिटवीन दैट किलोमीटर स्पेस अगर नदी प्रदूषित होती है तो वहां रहने वाले लोग, वहां लगने वाले कारखाने, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल और उनको एक प्रकार से दंड होगा उनको ठीक कर। दे हैव डन इट। तो इतनी नदी साफ करने के बाद इतनी केयर, एंड इट इज हैपनिंग देयर ऑल्सो, बट इट इज समथिंग डिफरेंट इन इंडिया। हम ये मानते हैं हमारी जो नदियां हैं वो जीवन दायिनी है, और इसके लिए हम देखते हैं नदी के किनारे ही गांव बसता है, शहर बसता है। लेकिन केवल बसता नहीं है, हमारे जितने भी साधु संत योगी सब लोग नदी के किनारे ही तपश्चर्या करते हैं। दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। और ऐसा ही एक सद्गुरु एक अलग प्रकार की तपश्चर्या करने के लिए निकला है, लोगों को जगाने के लिए। हिंदुस्तान में प्रत्येक नदी का अपना एक अलग महत्व है। हम जब गंगा की बात करते हैं तो गंगा एक पवित्र नदी है, पवित्र मानते हैं। जब हम यमुना की तरफ आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यमुना नदी जो है, क्योंकि उसी के किनारे मथुरा है और मथुरा में ही श्री कृष्ण ने ऐसे एक शासक को शासन किया था, वध किया था, कंस का कर्तृत्व दिखाया था और एक उत्तम शासन प्रस्तापित किया। और आप अगर यमुना नदी के किनारे का इतिहास देखो, दिल्ली तक आकर भी, तो एक प्रकार से लगता है ये कर्तृत्वशालिनी नदी है, कर्तृत्व बताती है और शासकों को कहती है आपको ठीक रहना पड़ेगा। मगर हमने यमुना को भी प्रदूषित किया है। आप अगर देखोगे गोदावरी और दक्षिण में हमारी नर्मदा नदी भी ऐसी है, वो भी उतनी ही पवित्र है, कुंवारी है लेकिन, और तपश्चर्या करने के लिए योग्य स्थान अगर कौन सा है तो नर्मदा के किनारा माना जाता है। आप अगर दक्षिण में जाओ गोदावरी में तो कहते हैं ये भक्ति की नदी है, प्रभु रामचंद्र यहाँ पर रहे। और पूरे गोदावरी का तट आप देखोगे तो भक्ति से सरोबार रहता है। आगे जाओ कृष्णा, कावेरी, हर एक नदी का अपना एक कैरेक्टर, एवरी रिवर हैज ए कैरेक्टर। और उस हमारे हिंदुस्तान में ही केवल ये बातें हैं। और ऐसी ये जो लाइफ लाइन नदियां हैं, इसको हमें कायम रखना है। इसके किनारे फिर से वो, मैं वेद घोष तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर पवित्रता से पानी बहता रहता है तो कहते हैं बहते पानी में को अगर आप देखोगे भी तो भी आपका मूड ठीक हो जाता है, नदी के किनारे बैठने से कहते हैं। मगर अगर हमें अपने बच्चों का, बिकॉज हमारे जो सद्गुरु है, ही ऑलवेज स्पीक्स टू यूथ,
और ये आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, हम उन्हें नाम तो रखते हैं, लेकिन उनका मूड ठीक पर रहना हो तो उनको वो पवित्रता का, वो कर्तृत्वशालिनी रिवर का, वो भक्ति भाव से सरोवर वो हो सके, ऐसे बहते शुद्ध पानी का दर्शन भी कराना ये उतना ही आवश्यक है. आई थिंक दिस इज द मैसेज ही वांट्स टू गिव, एंड नॉट फॉर अस ओनली, इट इज फॉर आवर फ्यूचर. हमारा फ्यूचर कैसे ठीक रहे. और इसलिए मैं इतना ही मानती हूँ कि हम भी थोड़ा थोड़ा तो मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति उस बात को कहता है. जैसे अभी हमारी मालिनी जी कह रही थी, इंदौर को आप लोगों ने मिल करके स्वच्छ रखा. मन में तो सबके भाव थे कि अरे हम फॉरेन जाते हैं, वहां तो एक कागज का कपड़ा नहीं दिखता है, हम खुद भी नहीं डालते, मगर ये यहाँ आते इंडिया तो अगेन द सेम थिंग. नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए. हम बोलते तो है मगर हम कार्य प्रवृत्त नहीं होते. एंड फॉर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि लाल किले से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब गरज उठा कि भारत को स्वच्छ बनाना है, तो एक एक नागरिक कहीं ना कहीं अपने मन से जाता. दिस इज द पावर. और इसलिए आज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, हम सभी मानते हैं, जैसे हमने कहा नर्मदा को साफ करना, हमने यहाँ कान रिवर के लिए भी हम अभियान, हम अपने आप मानते हैं यस, पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है. But now I am quite sure that when a Sadguru has given a call for river, definitely एक एक के मन में, क्योंकि यही होता है, एक तपस्पुत योगी अगर कुछ बात कहता है, एक ऐसा कुशल प्रधानमंत्री अगर सर्वस्व समर्पित करके कुछ बात कहता है, तो उसका एक प्रभाव होता है. और आई एम क्वाइट श्योर कि जो हमारे सदगुरु जी निकले हैं कॉल फॉर रिवर, तो मेरा विश्वास है कि ये कोई वो नहीं करेंगे. ही इज नॉट गोइंग टू डू, ही इज नॉट गोइंग टू प्लांट करोड्स ऑफ वृक्षात, पेड़. नो, वी हैव टू डू इट, बिकॉज हमारे शास्त्रों में कहा है, धर्मेणेव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम. हम एक दूसरे ने, हमें एक दूसरे का रक्षा करनी है. और ये एनवायरनमेंट के लिए भी लागू होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में या हमारे धर्म में कहो, धर्म कोई भी हो, हम पूरे एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलते हैं. स्त्रियां, मैंने जो अभी कहा महिलाओं का महत्व, पेड़ों की पूजा करती है तो पागल है, इसलिए शास्त्रों ने नहीं कहा पेड़ों की पूजा करो. हमारा कनेक्शन है कुछ उसमें, वो रहेंगे. एक एक चीज इस एनवायरनमेंट की साइकिल बोलते हैं तब पूरी हो जाएगी. और इसलिए हम लोगों को हमारी रक्षा करने के लिए पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट की रक्षा करना है, तो हमें ये काम करना है. ये केवल बताने के लिए, रक्षन्ति स्म परस्परम, जागो. एवरीबडी हैज टू डू इट, नॉट ओनली एनी मुख्यमंत्री, एनी प्रधानमंत्री, मगर इन लोगों ने जागरण का काम करना है. और जैसे मैंने कहा, कोई तपस्पुत योगी जिसके मन में भाव केवल और केवल राष्ट्र का हो, लोगों का हो, लोगों की भलाई का भाव मन में हो, विश्व की भलाई का हो, एनवायरनमेंट की भलाई का हो, ये भाव जो तपश्चर्या से, क्योंकि उनका जीवन भी वैसा ही है, तपश्चर्या से वो भाव उनके मन में जागृत है. और इसलिए उनके शब्दों का भी अपना एक महत्व है. आज मेरा पूरा पूरा विश्वास है, यहाँ हम सब लोग जो एकत्रित हैं, यहाँ से यही भाव ले करके जाएंगे. आज सदगुरु एक दिन के लिए हमारे बीच में आए हैं, अपनी बात कहेंगे ही, और उनकी वो बात को मन में धारण करते हुए हमारा अपना भविष्य सुधारने के लिए हम एक प्रकार से प्रण लेकर के, प्रण जोर से भी लेने की आवश्यकता नहीं, मन ही मन जो प्रण लिया जाता है वो जीवन भर याद रखता है. बजाय, मैं मानती हूँ, कोई आपको हाथ उठा के कुछ कहने के लिए, नो नो,
मैं अपने आप जो प्रण करूं वही कहीं ना कहीं मेरे साथ चलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है आज सदगुरु के वचनों से यही भाव हम सब के मन में पैदा होंगे। मैं सदगुरु का इंदौर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कितने लोग अगले 48 घंटे में पेड़ लगाएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। बस। अच्छा, 72 घंटे, 72 आवर्स। कितने लोग 72 आवर्स में? हाथ ऊपर कीजिए। नेक्स्ट 1 वीक अभी भी सारे हाथ ऊपर नहीं है, और एक ही हाथ ऊपर करना है, 2 हाथ ऊपर नहीं करने। 2 करेंगे तो 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। चलेगा? मुझे सबको चलेगा। 2 हाथ ऊपर कीजिए। और अगले 1 महीने में तो लगा ही लेंगे भाई। There you go. That's the spirit of Indore. That's the spirit of Madhya Pradesh. ये भूमि है मां नर्मदा की, जिसके तट पर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था और उन्हें हराया था। At the end of that विमर्श, भाष्यकार भगवान आदि शंकराचार्य wrote a small booklet called Vivek Chudamani, Nectar of Wisdom, विवेक, सत सत विवेक बुद्धि, जिसके कारण हम सत असत समझ सकते हैं। वो ग्रंथ ये कहता है एक जगह, दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। 3 things are rare. दुर्लभ हैं, वो रेयर हैं, जिनको पाने के लिए देवों का अनुग्रह, उनकी कृपा, उनकी अनुकंपा होना आवश्यक है। वो क्या है? 3 चीजें। मनुष्यत्वम, मनुष्यता का भाव, ह्यूमैनिटी, कंपैशन। मोक्षत्वम, मोक्ष पाने की इच्छा। इसलिए नहीं कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाना चाहता हूं, मुझे इससे छुटकारा मिले, इसलिए नहीं मोक्ष पाने की इच्छा, इसलिए कि भगवान से मेरा प्रेम है, मैं उस ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, यह मोक्ष पाने की इच्छा। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों का सत्संग। आज सद्गुरु जी के यहां आने से एक महापुरुष का सत्संग हम सबको यहां प्राप्त हुआ है। यह देवों की कृपा है, देवों की अनुकंपा है। और आपके आने से यह मंच, जो एक साधारण मंच था, महर्षि वेद व्यास का व्यासपीठ बन गया है। मुझे भगवत गीता के एपिसोड में से वो एक प्रसंग याद आता है, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, कि विभूति योग की शूटिंग पूरी हो गई। 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं क्या क्या हूं, बहुत कुछ कहा उन्होंने। और वो दिव्य स्वरूप देखने की इच्छा, वो लालसा अर्जुन के मन में जागी कि ये इतना दिव्य स्वरूप अगर भगवान का है, मेरे सखा का है, उसको मैं देखना चाहता हूं। वो भव्य है, वो दिव्य है। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण से कि ते रूपम ऐश्वरम द्रष्टुम इच्छामि। वो आपका रूप, वो जो ऐश्वर्य है, द्रष्टुम इच्छामि, उसको देखने की मेरे मन में इच्छा जागी है। तो कृष्ण ने कहा कि जागी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल इन नेत्रों से तुम उस दिव्य रूप को, उस दिव्यता का अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे तुम्हें वो दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, एक विजन देनी पड़ेगी, दिव्य चक्षु देने पड़ेंगे। और कृष्ण ने कहा ददामि ते दिव्य चक्षु। तब वो दिव्य दृष्टि दी गई, और तब जाकर प्रभु की वो लीला, प्रभु का वो जो रूप है, वो अर्जुन देख पाया। आज यहां टुडे सर, फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, all of us are Arjuns. All of us are Arjuns. And you are the Krishna.
Tonight you are the Krishna. You are the eternal Krishna. Krishna Tattva. Shiva Tattva. We seek your guidance, your divine guidance. This audience seeks, all of us seek. Tell us those 5 things that we need to do. Planting trees, yes. They all have pledged that they will plant trees. But beyond that, maybe there is something more that your divine knowledge has already thought of. We are ready to receive that nectar of your wisdom. सदगुरु जी जो बात कहेंगे अंग्रेजी में, उसको हिंदी में उसका अनुवाद 97 FM पर आप ट्यून करके सुन सकते हैं। मुझे जब मालूम है कि सब अंग्रेजी जानते हैं, फिर भी यदि कोई हिंदी में सुनना चाहता हो, कभी कभी हिंदी के कुछ शब्द भी मधुर सुनाई पड़ते हैं। यदि आप वो हिंदी सुनना चाहें, प्लीज ट्यून इन टू 97 FM। माई हम्बल pranam sashtang dandavat at your lotus feet. Please grace this Vyaspeeth. How much time do I have? The time is Nikaladarshi, it's all yours. Namaskaram to everyone. My involvement with mountains, forests and rivers goes back to a very early age. When I say involvement, hello? Left. When I say involvement, I'm not talking about enjoying the beauty of nature or seeing it as resource. For me, these forces, which we refer to as mountains, forests and rivers, in my experience, I saw them as a life much larger than myself. Between the ages of 12 and 17, almost every day, I swam in Kaveri. When I was little, over 17, I rafted down Kaveri, 163 kilometers, on just 4 truck tubes and a few bamboos, for 13 days. Those 13 days were a very profound experience for me. I saw the river as a life much larger than myself. People like you and me come and go, but the river has flown for millions of years and sustains life in proportions that you cannot imagine. Such a mighty force, such a mighty life, we are bringing it to a close. A life which is larger than anything that we can think of as life. We are bringing it to a place, a brink, where these rivers may not flow in future. Already many rivers which were perennial for thousands of years have become seasonal. The great rivers of India, like Narmada, Krishna, Kaveri, all have become seasonal rivers. They are no more perennial rivers. They are not flowing 12 months of the year. Kailashji was telling you about the Shipra circus. Yes, they saved that moment of the Kumbh by doing something, that is fine, but that's not the solution, that's only an adjustment. When my involvement became much more, because many times, weeks on end, I spent in jungles,
By myself, I survived in the forests of southern India, the most fantastic Western Ghats, which is the basis of many, many rivers. And in the last 25 years, I've been watching with concern how these rivers are depleting steadily. It is not like 1 year up, 1 year down. Steadily, gradually, they were depleting. So in response to this, we started what is called as Project Green Hands. In Tamil Nadu, we planted over 32 million trees, which has increased the green cover in Tamil Nadu significantly. Above all, it spawned a culture of caring for the environment. But I don't see this as a solution, as we are doing, so many other people are doing. Right now, Nitish, I'm sorry if I can call him that, been giving a call for all of you to plant a tree. Similarly, I gave a call and they planted 32 million trees till now. No, I'm telling you it's a failed project because 32 million trees looks like a large number, but still it is not a solution. It is nice, people feel proud, people are engaged with nature, but still not a solution. And particularly in the last 7-8 years, I've been noticing the depletion of rivers is very steep. If everything continues business as usual, in the next 15 years' time, 70% of our India's rivers will be seasonal, including the great rivers like Ganga. Ganga geographically covers Ganga basin covers 25% of India's land, 33% of India's agriculture, but 44% depletion of water has happened in 50 years' time. 79% of tree cover has been gone in 50 years' time. Narmada story is worse. In the Narmada basin, 94% of the tree cover has been removed in the last 50 years. 94%. What is the plan? Is it a plan for destruction? What is our plan for this nation? And Narmada waters, not a surprise, has depleted somewhere between 58 to 60% to what it was 50 years ago. Kaveri, because Kaveri was part of me in so many ways, we still fight for Kaveri in the south. Between Tamil Nadu and Karnataka, we keep fighting every year. Whenever the water goes down, in summers we fight, when the rain comes we forget. This is our way. So Kaveri has gone down over 40%. This year, this summer, Kaveri dried up for 3.5 months, 170 kilometers inland. The entire length of Kaveri is only 804 kilometers. Of this, the Tamil Nadu part of Kaveri is only 430 kilometers. In that 430 kilometers, 170 kilometers short of the ocean, Kaveri dried up. The pictures that you saw on the video of Kaveri are post-monsoon pictures. This is not summer's pictures, this is post-monsoon. If you go to Tiruchirappalli, Kaveri would be 1.5 miles wide. I have seen this just 12-15 years ago. Today if you go, it is about the width of this hall, post-monsoon. So this is not a joke. This is environment, and concerns of environment are not for the sitting rooms of the elite anymore. It is everybody's business, because it's no more a fanciful engagement, it is a fight for survival.
So what is it that we have to do? Shall I go and plant a tree today? Many of you raised your hands, I don't want to stop you because he's got you going. But that is for your satisfaction, that's not a solution. I'm in a place in my life, I don't have to do anything for my satisfaction. If I close my eyes, I can sit there, eyes closed till I fall dead. So I don't do anything for my satisfaction because I'm just blissed out. Okay. I don't have to do anything for satisfaction. But is it a solution? That's the only question. If we want a solution, we need a national policy. National policy to treat our rivers as a national treasure, not as individual private property. As right now, everybody is doing whatever they feel like according to their whims. Soil and rivers are deeply connected. If we deplete our soil, we will also deplete our rivers. Any farmer would know this, but suddenly we've got too much textbook science in our head and no sense. To call soil, soil, the United Nations has fixed a minimum percentage of 2%. 2% organic content has to be there in the soil if you want to consider it as soil. If you take away this organic content, soil will become sand. But in states like Punjab, Haryana, Marathwada, southern Tamil Nadu, northern Karnataka and some parts of Andhra Pradesh, the organic content in the soil is 0.05%, not 0.5, 0.05%, clearly slated to become sand in the next 3 to 5 years' time. 25% of India's land will be not cultivable in the next 5 years. In the next 40 years, 60% of India's land will not be cultivable. With 1.3 billion people on our hands, if we lose the ability to grow food in this country, what are we going to do with this nation? What is our plan? Now, if you want to ask any farmer in this country, you make a survey and see if you want. How many farmers want their children to go into farming? Believe me, it's less than 15%. This is one nation on the planet who has the longest history of agricultural practices. In southern India, it goes back to 12,000 years. For 12,000 years, we've been farming the same land. Somewhere between 6 to 12,000 years, almost everywhere in this country, we've been farming. When most parts of the world, they did not know what it means to do agriculture. When they could only kill something and eat, we were farming. The systems of agriculture were with us. So there is an immense knowledge in this. The farmer that you see may look illiterate, uneducated, but he knows something that you do not know. You may be MBA, you may be an agricultural graduate, try to grow one crop and see what will happen to you. There is an intrinsic knowledge which is thousands of years old, with which he is performing a magic, a miracle. Do not think agriculture is just one more trade. Transforming mud into food is a miracle. If you don't understand the miracle, from today onwards, serve yourself 1 spoon of mud in your plate every day and eat it like your achar on the side. Then you will know what I'm talking about. It's the same thing. Mud has become food. Isn't this a miracle? The man who performs this miracle, we have put him in such a bad corner today. Over 300,000 have committed suicide in the last 12 years. That's what I hear about the numbers. Every time this happens, I see reports saying, oh, this is because the tomato prices dropped. This is because some bank is aggressively pursuing him. No, I will tell you, if you and me get into agricultural activity in a land where there is no fertility, in a land where there is no adequate water, believe me, both of us will move towards suicide, 100%. Yes or no?
try to do farming in a land which has no fertility, where there's no adequate water, suicide is a natural thought. That's where we go. Unfortunately, that's where the Indian farmer is going. If only less than 15% of the farmers will encourage their children to go into farming, in the next 25 years, this immense knowledge of being able to transform mud into food, this will go away. Soil is depleting, water is depleting, the fundamental knowledge as to how to grow food, if this goes away, what are we going to do as a nation? They tell me today the statistics, 17% of India's food is already being imported in the last 8 years' time. Never before this was so. At one time it was, but we went through a green revolution and one of the greatest achievements in this country is, in the last 70 years, we built businesses, we built industry, many innovations we've made, our scientists are going to the Mars, but the most important achievement in this country is, without much infrastructure, with hardly any technology, with just traditional wisdom, our farmer has been growing food for 1.3 billion people, and that's not a mean achievement at all. But the way we are going, it looks like we're determined to lose all this ability which has made this nation what it is. Now, many terrible things are there in cold statistics. But cold statistics do not take into account what's beating in the human heart. If the right things are beating in your heart and my heart, these statistics mean nothing, because tomorrow will be very different from how today is. This is what we want to see. We want to see that India beats for its own well-being, that we won't look elsewhere for our well-being. We will make our well-being. If we want to make our well-being, there are many things, but the most important thing is our soil and our water. If these two things are not taken care of, there is no nation. There's really no nation without soil and water. The very body that you carry is just soil and water. If you get it today, you will do something sensible, otherwise anyway one day you will get it when you're buried. One day anyway you will get the point, but today if you get the point, this can become a sensible life. As a part of this, in the year 1998, certain experts from the United Nations came and they made a prediction that 60% of Tamil Nadu will become a desert by 2025. I don't like predictions. As I said, predictions come from cold facts. Cold facts don't know what is beating in my heart and your heart right now. So I called a group of volunteers and I told them, I made a simple calculation, because on that day, Tamil Nadu's green cover was only 16.5%. I said, say, national aspiration is 33%. If we have to make Tamil Nadu 33% green cover, we will have to plant 114 million trees. Their eyeballs rolled. Hey, Sadhguru, do you know what is 114 million? Do you know how many zeros? I asked them a simple question. What is Tamil Nadu's population? They said 62 million. I said, see, if all of us plant one tree today, take care of it for 2 years and plant one more, you got the number. The only problem is, all of us consume, but all of us do not do compensatory activity. This is the whole problem. For everything that we consume, should there not be some compensatory activity? If there is no compensatory activity, things get over at some point. And that's where we are going, because the land-population ratio in this country is cruel. It's a unique situation. No other nation has so much pressure on the land as we have. So when there is so much pressure,
We must pay enormous attention as to how we conduct our soil and water, but that attention has not been there. There are many reasons for this. The first and foremost is, in 1947, when we got independence 70 years ago, the country was left looted, literally. Everything that can be taken was taken. A large part of World War II expenses were borne by India. Over 1 million men went and fought in strange lands, not knowing what they're fighting for. And above all, the nation was broken into 3 pieces. The social stress of that, where over 500,000 people got killed and about 3 million people got displaced, all this put together, we got into a very basic survival mode, where there was no infrastructure, there was no education, there was no administrative mechanisms. So, first 50 years, we went into a very desperate survival mode. In this survival mode, we did many desperate things to somehow fix something. But in the last 20 years, we've been in more of a developmental mode. A time has come, we have to move into sustainable mode, otherwise our development and our survival will be under threat. To move into the sustainable mode, there are many things to be done. The most fundamental thing is to nourish our soil and our waters. These 2 things must be there as a base factor. Only upon that you can build a population. Only upon that you can build development. Only upon that businesses and industries, everything can happen. If we just destroy this one aspect of soil and water, then everything else will not go waste. So when we started this project Green Hands, when I told them 114 million trees, they all went like that. So as a sample, I made this happen. The hill behind us, where the Isha Yoga Center is, was shown off all the trees because there was an illegal furniture factory right in front of us. So we did everything possible to shut that down, but we could not because they had other kinds of strength. Then we bought them out, paying 4 times what they were worth. We bought it out and shut it down. And then I said, see, this is simple, we can do this. 4.5 days, nearly 5,000 volunteers. All I gave them was, I gave them 2 meals and a song to sing. In 4.5 days, this was a seed planting, so that's not counted in the 32 million. We employed a unique method to plant seeds so that the sprouting will be nearly 100%. And today, that entire hill, over 6 million trees standing, and the hill is green. Why I'm saying this is, we did not give up our lives to do this. Just 4 days of work. Just 4 days of work, sensibly done at the right time, and today, our temperatures are at least 3 to 4 degrees cooler than Coimbatore city, simply because of the greenery that's spread on this hill. And when we started the project Green Hands, later on, within a few months, I spent 6 years planting trees in people's heads. That's the most difficult terrain. Yes. Soil is very tree-friendly. You put a tree into the soil, both are friends, they will grow. But you put a tree into a human mind, it could just burn up. So, to create a conducive mindset around me took 6 years of work. Now we are only transplanting what has gotten into everybody's heads. This is happening much easier. Tamil Nadu's green cover has gone up significantly, and above all, it spawned a culture of environmental care, which is very good. In all this, the important thing is just this. After doing all this, I see this is still not a solution. Solution will happen only when the entire nation is focused in one direction. This is why the Rally for Rivers, so that there is a national policy.
as to how we should treat our soil and water. And this policy is a comprehensive policy which is beneficial to all the stakeholders. All the stakeholders must benefit. The river is the first stakeholder. River must benefit, the flows must increase. The life that rivers sustain, they must benefit. The farmer should benefit. The larger community should benefit. The governments, the central, state and local administration should benefit with more revenue. Only when everybody benefits, only when everybody benefits, you can sustain an activity. Whether it is marketplace or marriage, unless both the parties benefit, it won't last. You know that. Whatever activity happens, all the parties involved must benefit. We have set up modules. People are asking, where is that 1 kilometer land? There is land. Fortunately, of the 20,000 kilometer run that the major rivers have in this country, 25% of that land is still in government's hands. This 25%, I'm very sure we will make it into forests. The remaining 75% is in the farmers' hands. Of this, 6 to 8% are delta lands. We don't have to touch that. There's no need to do anything about the delta lands. 65% of the land, approximately 14,000 kilometers, which means 28,000 square kilometers on both sides. This has to move from crop-based agriculture to tree-based agriculture. If you tell the farmer he has to save the river, it is not a fair thing to do. Ask him to save the world, it is not a fair thing to do. So this is why this is an economic plan. We have already set up small modules where shifting from crop-based agriculture to tree-based agriculture, farmers' income will go up anywhere between 3 to 8 times. Some Vietnamese experts were with us as a part of this work. They are saying their farmers' income, shifting from paddy to fruit cultivation, their farmers' income went up by over 20 times, 2,000% increase in their income. We were amazed, how is this possible? So they are laughing at us. They are laughing at us because 22 years ago, they all as a group came to Indian agricultural universities. They got their bachelor's and master's degrees here. They went back home and implemented it in their land, and today Vietnam is among the top, moving towards the top fruit exporting country. $3 billion worth of fruit exports they're doing. But in their words, they said, we made it into a practical solution, you have earned PhDs. So we have the knowledge, it is sitting somewhere, that knowledge is not going to the land. So the river policy is looking at all these possibilities, how the knowledge that we have, the technologies that we have, has to go to the land. 84% of water is used by the agriculture sector in India with very low productivity. The same crops that we are growing, many other nations are growing with 10 to 20% of the water consumption that we are putting in. We are still irrigating lands as we did 1,000 years ago. There is a better way of doing everything. This is the time for us as Indians. In this, there were two challenges. One, fortunately, we have crossed. The two challenges were, the rivers are a concurrent subject between center and state. So one of the biggest problems has been they could never get concurrence from all the states. This has always been the issue. When I was at Puducherry, the Chief Minister, Sri Narayan Swamy, said, Sadhguru, during Rajiv Gandhi's Prime Ministership, I was in the cabinet, our experts made a policy very similar to what you're talking. We did everything possible, but we could not get concurrence from the states. But fortunately now, today's India is like this, that only 2 chief ministers I actually met and explained what the policy is about. For the rest, I just wrote a letter
within 15 days, all of them confirmed their participation in Rally for Rivers. And those states that we are not touching in this journey, in this 1 month-long journey, all those states are already writing to us that they are with us and the Rally for Rivers and the policy they want to implement. Many of them have already taken steps to implement. For example, Madhya Pradesh was the first state. This is the first state which is allotted. First state to allot 850 crores for plantation along Narmada banks. And Maharashtra is talking about 50 crore trees in the next 4 years. We have signed an MOU as a consultative partner with Karnataka government to plant 25 crore trees along Kaveri belt. We've signed an MOU. Andhra Pradesh Chief Minister is saying, Sadhguru, whether they pass it or not, Andhra Pradesh will be the first state to implement this. Then when I came to Telangana, people are saying, Sadhguru, we have already started this process, so they cannot be first, we are first. I'm saying this is fantastic. This is the kind of competition we want to see in this country. And these 9 states I have covered till now are ruled by 6 different political parties. But all of them are speaking in one voice. This is Bharat. For the littlest things possible, we can fight and quarrel. Sumitra ji knows very well. But when real issues come, we stand up as one nation. This is fantastic. So, this major hurdle which has held us back for last 30-40 years, which is concurrence, we have crossed that. Nation and all the states are in concurrence for the first time. So that problem put behind, the next issue is, why this missed call is, if we pass this policy and aggressively implement this, if we aggressively implement this policy, it will take 10 to 15 years' time for implementation. And it will take another 5 to 10 years before we actually see that river waters are actually coming up. To get 15 to 20% rise in the river flows, it will take anywhere between 15 to 25 years. This means 4 to 5 governments would come and go by the natural democratic process. How do we keep these 5 governments in the next 25 years focused on one policy? This is why the missed call. If the entire electorate gives a missed call, out of these 130 crores, I believe about 70 crores are electorate, people who have the franchise. Out of this, I said minimum of 30 crore people, if they give a call, no government is going to ignore it. Not just this government, whoever comes to power next, in the next 25 years, all of them, it'll be there in their mind that the entire nation wants this one thing to happen, that long-term policy for the well-being of our rivers is needed. This is why I'm begging you, this is our moment in this country. This is our moment in this country to clearly express that we are not a freebie generation. We are a mature democracy. As citizens of this nation, we have matured that if you do something for the long-term well-being of this nation, if you do something for the well-being of future generations, our children and yet-to-be-born generations, that we will do something positive, then we are with you. We are not looking for free this or that. This is a statement we have to make. This missed call is that statement. It's a vote in favor of a long-term river policy, because today there are a lot of online warriors. They make a call and look, where is the river coming up? It's not coming up. This is not an online river. Online river can be brought up and brought down any time you want. This is a real river. We have damaged it in the last 5 decades. To bring it up, it will take a certain amount of time. My commitment is,
50 years ago, how I experienced the rivers, the glorious rivers of India. When I crisscrossed India on my motorcycle, I always camped on the riverside. I have slept on the riverbanks, I don't know, maybe months on end I've slept on riverbanks because that was the best place to sleep for me. And I have experienced the rivers in a certain way. It is my commitment that our children must see these rivers the same way in the next 15 to 25 years. I don't know if they can show that. I entered Navi Mumbai, and there the administration there organized a little welcome. One little girl, one Marathi Mirchi, 7-year-old, and she gave a passionate speech covering variety of subjects about environment. And then she says, this Sadhguru says he floated down Kaveri 163 kilometers. I have not seen any river like that, I have to check it out. So this is the fate of our children. They have not seen a river flowing in full force. And now if you talk about great rivers, they are saying we must check it out. How do I know it's true? We have to show them it's true. It flowed gloriously in the past, it must flow gloriously in future. Thank you very much. So, 3 things we must do. What are the 3 things that you must do? You must give a missed call, you must make sure everybody that you know gives a missed call, you must make sure everybody that you do not know give a missed call. Right now, that's all the job, okay? Because in this country we have this problem, when we face something, we respond to it emotionally. Emotions are fine, but right now it's very important. This is a serious problem which needs a strategic approach. Just emotional response to this is not good enough. Can we sing the Nadi Stuti? Will you sing after me? Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punyatirtham Sindhu Saraswati Kaveri Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha Amritam Bharatam. Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punyatirtham Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Maha
सरस्वती कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वम् नदीराष्ट्रस्य महाअमृतम् भारतम्